last hearing was. मैंने कहा आपका इल्जाम हम पे तो नहीं है, हमने कितनी दफा सुना है इस केस को? मैं आपको ऑर्डर शीट दिखाऊं तो ये दूसरी दफा है, हम मेरे साथी याद दिला रहे। But we are responsible for our seniors. अक्टूबर 2018 में ये पिटीशन फाइल 2018 नहीं, वो क्योंकि वो पार्टी नहीं बनाया था ना, उसमें भी टाइम लगा। वो आपका कसूर था खान साहब, थोड़ा हमारा कसूर था, मगर वो आपका कसूर था, मान लीजिए, क्योंकि आपने एलिगेशंस लगाई थी अगेंस्ट पीपल हु वर नॉट बिफोर, सो वी हैड टू गिव देम अ नोटिस। सो वो दैट गोज इन योर, वी डोंट एक्सेप्ट रिस्पांसिबिलिटी फॉर दैट। जी जी। But the question that even shows that this was a case. Wasim Sajjad Sahab, can we benefit by your acumen? Have you been following what we are talking about? What is your view? Can it be remanded to the Supreme Judicial Council or not? But actually, I haven't studied this matter. I wouldn't like to make a comment without going through studying it properly, because it's an important question. But I would say that the Supreme Court of Pakistan is the highest court, and there's nothing in the Constitution which prevents it from remanding the case back to the Judicial Council. But as I said, I would like to study the matter further. Once the matter is before your lordship also has the power to do complete justice under Article 187. So there's no impediment. आपकी अपील कब लगी है? My lord, it's been filed earlier today. I think it will hopefully be numbered today. And once it is numbered, I think it can be fixed whenever the office will fix it. Point that you want to say at this juncture? Anyone, any of the council or? This is one of the exceptional cases. Earlier cases, like Justice Shaukat Ali's case, there was a detailed inquiry held. And after that, the Supreme Judicial Council submitted to the President to remove him. There have been even earlier cases, Ikhlaq Hussein's case, where inquiry was held. This is the first case of risk nature where no Supreme Judicial Council did not hold any inquiry into the allegations. So therefore, my submission is this goes right against the independence of... No, can you cite those cases, the earlier cases, where inquiries were held? One is Justice Shaukat Ali's case is PLD 1971 Supreme Court. 1971 Supreme Court. Page 585. 585. And here you are saying the Supreme Judicial Council did hold inquiry. Hold a very lengthy inquiry, some 80 witnesses and so on. So recommended the judge's removal. As in the next case is, this is Justice Shaukat Ali. Earlier case was Justice Ikhlaq Hussein's case, PLD 1960 Supreme Court. Yeah, page there, 26 perhaps. जी अच्छा उसमें नहीं वो पेज नंबर अखलाक हुसैन हम ढूंढ लेंगे, चलें खैर अगला वाला बताते हैं। कोई और भी केस है? ये दो केसेस हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट जज वाज रिमूव्ड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी। अब सर एक और बात, 1956 का मैंने कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम देखा है, उसमें कहीं इंक्वायरी की रिक्वायरमेंट नहीं थी एज सच, बट inquiry was held. Which was that provision of 56 Constitution? Which article? Earlier article was 128. 128. 60, under the 60. Article 128, Supreme Judicial Council, which did not specifically mention the word inquiry. It mentioned inquiry. Article 128 was in the same terms as Article 209. But I'm talking about 1956 Constitution. Under the 1956 Constitution. किसमें नहीं था? ये इसमें नहीं था अखलाक हुसैन वाले केस में, स्टेट वर्सेस अखलाक हुसैन। नहीं, वो कौन सा आइन था जिसके आप जिक्र कर रहे हैं? 56 का। उसमें नहीं था? उसमें ये नहीं था कि इंक्वायरी जरूरी है। उस आइन की कौन सी शिक थी?
उस आइन की शिक थी आर्टिकल 169 69 169 अच्छा 169 अच्छा इसमें नहीं था हाँ उसमें अब आप ये I read that out. नो इंक्वायरी रिक्वायर्ड हाँ जी A judge of a high court shall not be removed from his office except by an order of the president made on the grounds of misbehavior or infirmity of mind or body if the Supreme Court उस पर Supreme Judicial Council नहीं Supreme Court ये function करते थे. If the Supreme Court on reference being made to it by the president reports that the judge ought to be removed on any of those grounds. ये article 169 था उसमें और इसके बावजूद भी डिटेल इंक्वायरी की गई थी उसमें और डिटेल इंक्वायरी ये अखलाक हुसैन का केस था तो 56 कॉन्स्टिट्यूशन वाज अंडर कंसिडरेशन और द 60 कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा मगर उसके बावजूद भी इंक्वायरी हुई थी. सो मेरी गुजारिश ये है कि दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ इट्स नेचर वेयर ए जज इज रिमूव्ड विदाउट इंक्वायरी. It will have a repercussion for the future because judges of the Supreme Court has no other security available to him except that a Supreme Judicial Council makes inquiry into the allegations. If that is taken away from him, then he is left on the mercy of the person who alleges against him, whether he is president or whether he is any other person making a complaint. So therefore, my submission is that a detailed judgment is required to give why inquiry is so necessary in cases where the allegations against the judge of the superior courts, for which there cannot be any recommendation for removal without holding a proper inquiry into it and giving a statement of allegations. Even in the case of Shaukat Hussain, there were 3 allegations, specific allegations made. Similarly, in case of Sheikh Shaukat Ali in 1971, specific allegations were made against him, on which inquiry was held. In here, no statement of allegations were ever given to the petitioner, and naturally, एक और भी केस था ना वो खान साहब वाला जी एक और भी केस था ना वो रिपोर्टेड है या नहीं है ये दोनों केसेस तो फजले गनी खान साहब का कोई उसमें केस चला था या नहीं चला नहीं था इनका नहीं चला था No, sir. खान साहब एक बात बताएं आप इसके अंदर तो एलिगेशन डिफरेंट है शौकत अली साहब वाले में और अखलाक हुसैन साहब वाले में. यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन की बात है सब सेक्शन 5 ऑफ आर्टिकल 209 वो इंफॉर्मेशन की बेसिस पे, लेकिन यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस लिया है. तो यहाँ तो कॉग्निजेंस लिया है इसने. वहाँ पे इंफॉर्मेशन किसी पब्लिक पर्सन ने किसी ने कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं दी है. तो इंक्वायरी उस सूरत में करी जाए जब कॉग्निजेंस लिया है कोर्ट ने खुद लिया, रजिस्ट्रार ने दूसरा लेटर भेजा है, बिल्कुल उसकी बेसिस पे. तो ये चीज जो है यहाँ पे जरूरी है इंक्वायरी, बहुत जरूरी. जब कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट खुद ले रहा है और भी ज्यादा जरूरी हो गई है. जनाब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, और भी ज्यादा जरूरी हो गई है. हुआ ये था कि ना 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये केसेस में कुछ एक आध मेरे हिसाब से कुछ करप्शन का भी केस है इसका. जी distinguished, but I'm just saying the precedent available with us. गुजारिश ये है कि इसमें हिस्ट्रीज की ये है कि ना 56 कॉन्स्टिट्यूशन में विदाउट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किसी जज को रिमूव किया जा सकता था, ना 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये हो सकता था, 73 कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं हो सकता. फॉर द फर्स्ट टाइम 17th अमेंडमेंट में ये लाए गए थे. द काउंसिल ऑन इट्स ओन, द काउंसिल में ऑन इट्स ओन मोशन, ये पहली दफा 2005 में इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशन में कि इवन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल विल हैव द पावर ऑन इट्स ओन ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट अवेलेबल कैन प्रोसीड अगेंस्ट अ जज ऑफ हियर. दिस इज द केस हियर. इट इज नॉट अ केस ऑफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, इट इज अ केस विद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल. कैसे शुरू हुआ ये जरा में दिखाइए. लेटर रजिस्ट्रार साहब दोबारा ये बताएं कैसे क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने क्या अपने तौर पे ये उठाया या वो किधर या रजिस्ट्रार ने एक नोट लिखा, रजिस्ट्रार ने किस कैपेसिटी में लिखा, ये अपने तौर पे ना कंप्लेंट है ये वो दिखाएं. रजिस्ट्रार ने किस कैपेसिटी में दी ये भी देखना है. दिखाएं क्या चीज है उसको. 39 पेज के ऊपर है ये 39 पेज पे पैरा 3 2018 को रजिस्ट्रार ने ये पेज नंबर 39 ऑफ द पेपर बुक. जी सर ये है
सर यहाँ पर upon perusal of the note put up by the secretary of the council. ये नोट किधर है, किस पेज पे? नोट नीचे है सर दिया वो पैरा 3 में। आपके कॉपी लगाई आपने? एक्चुअल लगी हुई है जी सर, जी copy कॉपी भी लगाई, इन्होंने खुद भी जो जवाब दिया है रजिस्ट्रार ने। वो दिखा देना एक्चुअल नोट कहाँ है? जी सर ये 21/7/2018 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सदीकी एड्रेस। नहीं पेज कहाँ है? पेज कौन? ये पेज 39 पे सर। नहीं ये तो उसका रिप्रोडक्शन है ना। रिप्रोडक्शन है। मुझ में एक्चुअल नोट दिखाइए मुझे। एक्चुअल नोट्स हमारे पास तो नहीं है, ये हमें तो ये रिपोर्ट से डॉक्यूमेंट फाइल किए, इसमें क्या है सारे ये जितने? अब उन्होंने जो ये सर जवाब दिया 73 पेज पे एक लेटर है अरबाब मोहम्मद आरिफ साहब का। जी कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अभी जो ये 31 जुलाई 2018 का है। जी हाँ आई एम डायरेक्टेड टू सर्व अपॉन यू द क्लोज। ये तो बाद में है ना। कंप्लेंट जो इन्होंने रिसीव की है वो 23/7 की है, जो रजिस्ट्रार ने वो कंप्लेंट मेंशन किया, उसको रिप्रोड्यूस किया हुआ है पेज नंबर 39 पे पैरा 3 में रिप्रोड्यूस किया हुआ है। किया बिल्कुल सही, एग्जैक्टली वो रिप्रोड्यूस किया। देन द नोट पुट अप बाय द रजिस्ट्रार एंड द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द स्पीच। नोट जो है हाँ ये नोट ऑन टॉप ऑफ पेज 39 ऑन 21/7/2008 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सदीकी एड्रेस डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी ड्यूरिंग दिस स्पीच ही एक सेकंड 39 के शुरू में सर, पेज 39 सर, ये पैरा 238 से शुरू हो रहा है। पेज 39 के ऊपर जो फर्स्ट पैरा जनाब देख लिया। नहीं वो तो एलिगेशन है ना जी एलिगेशन है। अच्छा नीचे पैराग्राफ 2 से पढ़िए। सर ये पैरा 2 on page 38 जी। on 23/7/2018 the secretary of this council registrar Supreme Court of Pakistan submitted the following note before the chairman of the council chief justice of Pakistan। ये वो फिर नोट 23/7 को रखा गया। On 21/7/2018 Honorable Mr. Justice Saddiqui No, he was acting pursuant to a direction of the Supreme Judicial Council, or my lord has asked, Justice Jamal has asked that he did it himself. एक तो ना you do it. One is he does it, comes before the Supreme Judicial Council. So it doesn't say so much, but it appears that there was some kind of We will go by the Constitution. Constitution says the council on its own. on its own. Secretary is not the council. नहीं तो He may be complainant. it may He's part of the he's part of the Supreme Judicial maybe Council. the council had directed him to do it. I don't know. Nothing is on record, कोई चीज नहीं है। ठीक, लेकिन ये इसका मतलब उसने अपनी कैपेसिटी, उसने अपने पर्सनल कैपेसिटी में दिया। आप ये हियरिंग जो अच्छा एक चीज बताइए, आप जनाब पढ़ लीजिएगा। कितनी दफा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये केस लगा आपका? जी आप कितनी दफा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने आपको तलब किया? एक दफा, only on one occasion. What happened on that occasion? On that occasion, we said that please, in the first place, No, were you asked something? Why were you called? we were called to explain as a preliminary hearing before inquiry and preliminary hearing hoti under the Were you 2000. was the petitioner alone or was he assisted? I was with him. क्या as हुआ था? जरा counsel. बताएं क्या हुआ था उस दिन? उसमें यही क्वेश्चन हुआ कि ये क्या स्पीच की है आपने? Okay, we made a speech which we नहीं वो ठीक है बस so it was a casual formal meeting. What वो चार्ज फ्रेम हुआ आपके खिलाफ क्या कोई हुआ? चार्ज फ्रेम नहीं है, कोई चार्ज फ्रेम नहीं है, बल्कि इससे पहले No, we may need to see the record of the Supreme Judicial Council. जरूर देख लीजिएगा। कोई कहा यहाँ भी कहीं रिपोर्ट में भी नहीं कहा गया कि कोई चार्ज फ्रेम हुआ है। रिपोर्ट में देख लीजिएगा ना, कहीं पर ये नहीं कहा गया कि मेरे खिलाफ कोई चार्ज फ्रेम हुआ, स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन दी गई जिसका मैंने जवाब देना था। नथिंग ऑफ दैट सर। आपको कोई शोकॉज नोटिस नहीं वो इशू हुआ? शोकॉज नोटिस दिया वो गया। किधर है? वो शोकॉज नोटिस Page 74 पे, 74 of the petition. ये जनाब पेज 42 पर रिप्रोड्यूस भी हुआ है जज। पेज 74 पर इसका ये तो वेरेस अच्छा नाउ यू आर
ये पेज 75 पे आ जाइए ना, ये है ना ये है जी पेज 75 पर. Now your lordship are hereby called upon to explain your conduct with regard to the following allegations which prima facie constitute misconduct on your part within the meaning of paragraph B of clause 5 and clause 6 of article 209 of the Constitution. You were, while addressing the District Bar Association Rawalpindi on 21/7/2018, have leveled the following serious allegations pertaining to superior judiciary and a state institution. तो देखिए इधर तो क्वेश्चन ऑफ सीकिंग पब्लिसिटी नहीं एलिगेशन है, ये नहीं है, ये तो एलिगेशन वही है ना, सब्सटेंस पे जा रहे हैं स्टेट में. इट्स नॉट अच्छा making a speech and on the content of the speech actually. अच्छा पढ़ें बाकी पढ़ें. That ISI is fully involved in manipulation of judicial proceedings, including marking of cases to honorable benches. 2. That ISI personnel approached Chief Justice Islamabad High Court and asked him not to let Mr. Nawaz Sharif and his daughter come out of prison before general elections 2018 and not to include your lordship in the bench. And that Chief Justice Islamabad High Court responded that the bench will be constituted as per their desire. That your lordship claimed to even have knowledge of the person who conveys messages to the Supreme Court, that daily proceedings of accountability court were being reported somewhere, and that your lordship also knows the reason why the administrative control of Islamabad High Court as per statute was removed so that no judge could look into the proceedings, that your lordship was asked to give assurance that your lordship would give decision as per their request, and then references pending against your lordship would be closed. That if your lordship decided cases according to their desire, your lordship would be made Chief Justice Islamabad High Court by September 2018. Upon presentation of the transcript of your speech, Honorable Chief Justice of Pakistan had been pleased to observe that the allegations leveled in the speech had cast aspersion and maligned the superior judiciary of the country and berated its independence. It also implies some other national institutions. And the Honorable Chief Justice of Islamabad High Court was asked to comment upon the veracity of the allegations leveled against him. He was also asked to obtain from your lordship the material evidence available, if any, to be immediately transmitted to the office of the Chief Justice of Pakistan for consideration and appropriate action if necessary. In response, Honorable Chief Justice Islamabad High Court offered his comments by letter dated 29/7/2018, wherein his lordship responded that while a letter dated 24/7/2018 received from your lordship regarding allegations leveled against Honorable Chief Justice of Islamabad, his lordship has categorically denied all the allegations. The above act on your part amounts to misconduct as envisaged in the provisions inter alia of Article 2, 3, 5 and 9 of the Code of Conduct prescribed by the Supreme Judicial Council. One fact I want to bring to the notice, sir. At the time when these proceedings were initiated, proceedings were going on against Justice Anwar Kansi, Chief Justice of Islamabad High Court, before the Supreme Judicial Council for quite some time. I remember in another case when he sat on the Supreme Judicial Council and I objected. That was a case where I was counsel for Justice Farooq Irfan. I objected to his sitting on the Supreme Judicial Council on the ground that under clause 3 of Article 209, a judge against whom proceedings under Supreme Judicial Council were being was it the same matter or some other matter? That was a question. They declined that. I don't understand your contention. Are you saying, suppose... I'm disclosing, I'm stating facts. No, 1 second. In fact, you may be stating, but you are making a legal implication out of the stated facts. Now, for instance, suppose the Supreme Judicial Council is legitimately convened to inquire about a judge. It may be used as a tactical ploy to file complaints against all the members of the Supreme Judicial Council and then say, oh, none of you can hear the matter. So
merely that in itself is nothing relevant unless there's a direct nexus. You know, otherwise तो ये तो बड़ा खूबसूरत होगा. इनके भी खिलाफ कर दो, वो फेल ही हो गया जुडिशियल काउंसिल. मैंने ज़िमनन बताई कि उस वक्त ये ऑब्जेक्शन इसलिए लिया गया था कि जस्टिस अनवर कांसी वाज अंडर इंक्वायरी इन अनदर केस अगेंस्ट हिम. देखिए खान साहब, आप उसकी आप रिकॉर्ड मंगा लें. खान साहब सॉरी, या तो आप इसको कोई दलाइल देना कानूनी आईनी, ये मुझे बात समझ नहीं आ रही है भाई. हमें नहीं पता कल कोई 50 कंप्लेंट फाइल कर दे सब जजेस के खिलाफ तो सुप्रीम इदारा ही खत्म हो जाएगा. नहीं, वो इंक्वायरी वहां होती है जहां सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सेज दैट देयर इज अ प्राइमा फेसी केस for proceeding against him. There was a case which was going on, inquiry was going on. How would that matter to him, to the petitioner? How it maybe he gets removed, both get exonerated. मेरी बात मुकम्मल सुन लीजिएगा फिर उसके बाद. हाँ बताइए. हुआ क्या, ये जो फैक्ट्स यहाँ दिए गए हैं कि उनको खत लिखा गया था कि बताएं ये एलिगेशंस हैं, उन्होंने डिनाई किया. What happened? मुझे 11 अक्टूबर को रिमूव किया गया ऑन द रिपोर्ट ऑफ द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल. उसी दिन या उससे अगले दिन उनको एग्जोनरेट कर दिया गया फ्रॉम द चार्जेस ही वाज फेसिंग बिफोर. तो सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं. That the very next day, ये facts जनाब आप I'm saying for the sake of arguments, if these facts are correct, what does it mean? It means, sir, that वो चूंकि गवाह बन गए हमारे खिलाफ तो उसको उसकी जो एलिगेशन से उसे एग्जम्प्ट कर दिया गया. नहीं, क्या वही कंप्लेनेंट दोनों केस में था या तो कुछ ऐसा नेक्सस जोड़िए ना. ये बातें और है, मैं सिर्फ जनाब को बता रहा हूँ देखिए कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने किया क्या. जब उन्होंने मेरी एलिगेशन को डिनाई किया तो उनको छोड़ दिया. जहाँ तक आपकी बात सब देखिए, हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल पे ऐसे उंगलियां नहीं उठाएंगे. जहाँ तक आपने बात की ना इंक्वायरी की, वो तो हमें समझ आ गई ना. आपने एक आईनी बात कर दी, वो समझ आ गई. अब ये हो सकता है नहीं हो सकता, अभी हमें इस मफरूजों में क्यों जाएंगे. नहीं, लेट्स स्टे आइन पे बात करें, क्योंकि अब आप 184(3) में आ रहे हैं. देखिए इसमें 184 का दरवाजा खुलता है, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट का एलिमेंट आ जाता है. हर जज की सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड इज रिमूवल आई थिंक इज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, इसलिए उसका दरवाजा खुल जाता है. आ गई बात इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आपने बात कर दी ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल, बिल्कुल ये भी समझ आ गई. मगर अब ये जो बाकी चीजें ये इसमें कुछ समझ नहीं आ रही बात. इसलिए कि जो हो सकता है सही भी हो तो सो व्हाट. ये पोर्शन मैंने पढ़ के आपने कहा तो मैंने पोर्शन पढ़ा. अच्छा इसको छोड़े, कोई और बात करें. चलिए तो मैं नहीं, कोई और बात करें तो बताएं. मेरी तो गुजारिश सिंपल ये है कि दिस इज अ केस वेयर ए जज हैज बीन रिमूव्ड विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस. We got the point. And we are just saying how to go forward. That's all. This order has to go. This report has to go. Has to be quashed. So that in the future. But what about the public interest in the matter? They need to know. So, or they are not entitled to know. उसके लिए मैंने ऑलरेडी सबमिशन की है कि ये ऑर्डर सेटिसाइड होके इसको जनाब रिमांड कर सकते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल एंड इंक्वायरी इनटू द मैटर. दैट इज द आंसर टू माय माइंड. इफ योर लॉर्डशिप थिंक्स अगर आप नहीं ठीक है, इफ यू कंक्लूडेड, वी डोंट वांट टू कट यू शॉर्ट, कैन वी मूव ऑन टू सलाउद? आई जस्ट सॉ दैट ही इज इन कराची. जी ठीक है सर, मेरी सबमिशन ये है कि रिमूवल विदाउट इंक्वायरी इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑट टू बी स्क्वैश्ड. हामिद साहब, आप इस एस्पेक्ट को तो डिनाई नहीं करेंगे कि जस्टिस सिद्दीकी साहब को एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी गई थी, क्योंकि प्रोसीडिंग्स 2 महीने से ज्यादा चली हैं और कम से कम 2 से 3 रिप्लाईज इन्होंने जमा कराई हैं. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हामिद साहब आपसे पूछ रहा हूँ. जी सर, सॉरी, मैं ये कह रहा था कि आप इस एस्पेक्ट को तो डिनाई नहीं करेंगे कि जस्टिस सिद्दीकी साहब को एम्पल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी गई है. 2 महीने से ज्यादा प्रोसीडिंग्स चली हैं और इन्होंने कम से कम 3 से 4 रिप्लाईज अपनी जमा कराई हैं. लिहाजा ये एस्पेक्ट कहना कि जी इनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मिली ही नहीं या इनको टाइम नहीं दिया गया, तो ये तो किसी हद तक के दुरुस्त मालूम नहीं होता रिकॉर्ड से. लेकिन अब प्रोसीडिंग शुरू हुई है 23/8, 23/7 को और
कंक्लूड हुई हैं 1 अक्टूबर को, यानी कि तकरीबन 2 महीने से ज्यादा चली हैं प्रोसीडिंग्स। और सुन तो लीजिए, और कम से कम 2 से 3 दफा इनकी रिप्लाईज आई हैं, और उनकी रिप्लाईज जितनी भी हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कंसीडर करी हैं और सारी रिप्रोड्यूस की हैं अपने ऑर्डर के अंदर, और उसके बाद फिर इनके खिलाफ ये फैसला दिया गया है कि जनाब ये मिसकंडक्ट के मुर्तकिब थे। इसके बारे में आपका क्या कहना? जी, मैं ये कहता हूं, उन्होंने एक शो कॉज नोटिस दिया 31/7/2018, उसके जवाब में एक प्रिलिमिनरी मैंने सबमिशन की, क्योंकि 14 दिन दिए गए थे। मैंने कहा मैंने फैक्ट सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं और मैं एडिट रिप्लाई दूंगा। फिर मैंने एडिट रिप्लाई दी, ये 2 रिप्लाईज मैंने दी है। एक एप्लीकेशन मैंने और दी उसमें, जो रिकॉर्ड पर है पेज 223-24 पे, उसमें मैंने कहा कि इन द फर्स्ट प्लेस addressing a district bar association is not a misconduct within the meaning of Article 209. But if this honorable council thinks that this is a case in which I should be proceeded against, please, in that case, give a public hearing to us. Give it as an open court. मैंने ये एप्लीकेशन दी, जिसको कभी उसके बाद एक इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हुई, उसमें भी मैंने ये बात रिपीट की कि अगर जनाब मजीद प्रोसीड करना चाहेंगे, उनको तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी थी, वो कोई फाइनल इंक्वायरी जो है सिटिंग नहीं थी, तो मुझे आप ओपन हेयरिंग दीजिएगा। ये पेज 313 के ऊपर ये मौजूद है मेरी दरखास्त, पेज 313 पर, पेज 313, ये वॉल्यूम 2 होगा जी इसका, इस केस का पेपर बुक 2। इसकी तारीख है 29/9/2018। पेज क्या बताया था आपने? The applicant, पेज आप दोबारा 313 sir, 313 application for open hearing guaranteed under the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. ये इसकी आपकी इस्तदा कौन से पेज पे? इस पे फैसला क्या हुआ? It is therefore prayed. इस पे क्या फैसला हुआ जी? डिसाइड क्या हुआ? डिसीजन उससे नहीं हुई। I was never given any hearing. इसके बाद the one hearing was in camera. इसमें इशू तो ये है कि जहाँ तक तकरीर की बात है, आप तकरीर डिनाई नहीं कर रहे हैं, मालूम सिर्फ ये करना है कि ये मिसकॉन्डक्ट में आता है या नहीं, नंबर 1। इसका दूसरा एस्पेक्ट जो है, जो कि बार बार मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो जो एलिगेशन थी उसको मालूम करना चाहिए था दुरुस्त थी या नहीं थी। तो क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो तहकीकात कर सकती है? सपोज अगर आज हम रिमांड भी करते हैं, तो क्या वो तहकीकात वहाँ हो सकती है या इसको कहीं और होना है? हाँ, बिल्कुल इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए थी, बल्कि पहला कौन करेगा इंक्वायरी? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को करनी थी ना। नहीं, वो दूसरी एलिगेशन की जो इन्होंने एलिगेशन लगाई, उसके बारे में क्या कहते हैं? तो एलिगेशन ये जो कह रहे हैं, जो कोर्ट्स पे जो बाकी रिस्पोंडेंट्स पे जो एलिगेशन लगी है, क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस हद तक तहकीकात कर सकती है? बिल्कुल कर सकती थी, और बल्कि मैंने ओपन हेयरिंग के लिए कहा था कि आप हमें ओपन हेयरिंग दें। देखिए, शायद मैं क्लियर नहीं कर रहा हूँ, आप पे ये एलिगेशन तो नहीं है कि आप सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। आप पे एलिगेशन ये कि आपने जुडिशरी को मिलाइन किया, जो कि मिसकॉन्डक्ट में आता है। ठीक, वो तो आप मान रहे हैं कि तकरीर की सिर्फ ये देखना है कि आपकी तकरीर ज़ुमरे में आती है या नहीं, लेकिन जो एलिगेशन है उसकी तरफ तो किसी ने तवज्जो नहीं दी कि वो एलिगेशन किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक गलत है। उसकी गलत है तो ही शुड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, और अगर दुरुस्त है तो रिस्पॉन्सिबल ही शुड फेस। लेकिन सवाल ये कि कौन करेगा? लेकिन उन्होंने इंक्वायरी करनी थी ना इसमें। पहले तो मुझे स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस देना था कि ये एलिगेशंस हैं इनका, इसको आप मीट करें। कोई स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन कुछ नहीं किया गया। सो गुजारिश मेरी ये, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वेरी पावरफुल बॉडी, आप जरा 210 भी पढ़ लें आइन का। ये बिल्कुल सही है कि जरा देखिए, इसकी जरा मैंने अभी इसके जरा अल्फाज का चुनाव जरा देखिए। और
counsel to enforce attendance of persons, yes. नहीं टेक्स्ट पढ़िए ना. For the purpose of inquiring into any matter, Any matter. Not pertaining to, it doesn't connect with the conduct of the judge. अभी I widened up the scope. जरा आप पढ़े आगे. sir, वो उससे connected. नहीं जरा चले The पढ़ते हैं आगे. council shall have the same power as the Supreme Court has to issue directions or orders for securing the attendance of any person or the discovery or production of any document, and any such direction or order shall be enforceable as if it had been issued by the Supreme Court. The provisions of Article 204 shall apply to the content powers. So it's a very powerful body. It can call anybody. That is what, in the context of inquiry, naturally, it has to be. It's not hearing a case. It's inquiry. So वो आपने जो इंक्वायरी कमीशन की बात की तो ये खुद ही इंक्वायरी कमीशन है इन अ वे. It's more powerful than inquiry. Contempt के पास भी इनके पास है. बिल्कुल सही है. मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं submitted, the answer is. खान साहब, let me put my anxiety to you. Every Supreme Judicial Council is not the Supreme Court. It's a separate constitutional body. Agreed? Every constitutional body should have maximum autonomy to decide matters. Agreed? Thirdly, we don't want to encroach or say or do anything. It just so happens that I'm a member of the Supreme Judicial Council as well, but we create precedent as well. That it undermines the Supreme Judicial Council. Supreme Court is not a watchdog over. However, like every other constitutional body, when a constitutional provision or a fundamental right is being violated by anybody or not being considered, let's both ways, then the Supreme Court is the only court which has the power, or the High Court, not in this case, to direct that this be done. Yes. So we have to be very careful how we proceed in this matter, because it will, like you are citing Justice Clark's case after 50 years, this will become precedent and it will be cited before us maybe earlier than 50 years. So we have to be very careful as to not disturb the perfect balance that the constitution makers have provided in the constitution. There is an intervening judgment 2018 की, उसमें ये सारे एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे डिस्कस हुए हैं, और उसमें ये आया उसकी हैसियत क्या है ये भी डिस्कस हुई है. मेरी गुजारिश है उस जजमेंट को जरा PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 538. I was counsel that case. Again, Shaukat Siddiqui's case. This is Iftikhar Chaudhry's case? This is PLD 2018. वो अच्छा एक और जो आपका मैटर नहीं ये नहीं का है, ये तो आप ही का केस है ना. जी वही. इसमें ये एस्पेक्ट प्रोसीजर एस्पेक्ट्स बड़े डिटेल में डिस्कस हुए हैं. Which part you want to read from? जी अब मैं आपको वो जो है ना बता दूं कि वो मेरे नोट्स निकाल लो, नहीं दूसरे वाले नोट्स में. पेज 5559 पे आ जाए. 538 से जनाब पेज 5559 पे पैराग्राफ 51. My Lord, my lords, am I needed for these proceedings, or can I be excused for now? Is there something urgent? Yes, I have. There's a matter which I have to argue, not before. Okay, fine. ठीक है. But it must take more. कोई बात हुई हमको बता देंगे. But you've noted the points, I have. ठीक. Sir, this judgment is very thorough judgment discussing various aspects of Article 209. पहला जो point out करूँगा वो page 555 है, para 46. जी. Historically,
Para 46. Page 555. Historically, para ji. 46. Historically, the fundamental rights of the people require protection from the excess of the executive and the vested interest, both commercial and political. In order to safeguard the fundamental rights of the people guaranteed under the Constitution, the independence of judiciary obviously must be insulated from the onslaught of the executive and such vested interests who are past masters at institutional capture. Thus, the security of tenure of judges, more so those of the superior courts, is imperative, and therefore adequate safeguards in this behalf are provided, including by enacting what appears to be a rather cumbersome and strict process of their removal. This cardinal principle is reflected in the constitutional dispensation of all the democratic countries, people by citizens and not subjects. The exception in this behalf are almost always found in... Fine, you don't need to say this, it's obvious, ji. नहीं सर, एक ये बात जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो जनाब देखिए पेज 559, ये जरा पैरा 51, ये जरा जरूर देख लीजिए. Page 559, पैरा 55. 559. Page para 51. The relevant provisions of the Constitution, more particularly Articles 209, 210 and 211, when examined in the light of the judgment handed down by a larger bench of this court in the case reported as Chief Justice of Pakistan Iftikhar Muhammad Chaudhary, and the previous pronouncements on the subject noted and quoted with approval in the aforesaid judgment, the relevant portions whereof have been reproduced in extenso herein above, should reveal that, firstly, the SJC is a unique forum created by the Constitution. Secondly, the SJC is not a court, though it may exhibit some of its trappings, including the power to punish for contempt. So it is not a court. Yes, year 2010 की judgment भी है. Thirdly, the proceedings before SJC are essentially a fact-finding inquiry, sir. This is what I am submitting here. This is the function of the SJC. Fourthly, the SJC is akin to a domestic forum and it conducts administrative proceedings regarding the question of conduct or capacity of a judge who is to be judged by his own peers. Fifthly, the findings of SJC are recommendatory in nature and do not enjoy the status. So, yes, agreed. What is the point you want to make? I'm trying to make here it's a domestic forum. Your Lordship was saying that it's just like as if it is some kind of a rival court to Supreme Court. No. It is a domestic body. No, it is not. It's a constitutional body. It's a constitutional body. So, what happened in this case? Why did you come to court? What relief did you get or not get? इसका primary function जो है वो inquiry है. नहीं, ये फैसला जो आप साइड कर रहे हैं, ये क्यों आया आपका केस सुप्रीम कोर्ट में? ओपन इंक्वायरी केस क्यों आप लाए सुप्रीम कोर्ट ये वाला? ये इसलिए कि हमने कहा था कि इस केस में कि हमारी ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कहा नहीं, इट शुड बी इन फोरम. इस केस में फिर तो आप ये ग्रीवेंस दोबारा एजिटेट नहीं कर सकते हैं ना हमारे सामने. नहीं, बात क्या हुई, इसमें उन्होंने अलाउ कर दी ओपन इंक्वायरी. दिस जजमेंट अलाउड ओपन इंक्वायरी subject to certain conditions. वो पैराग्राफ किधर है? जी वो उधर भी आ जाएगी. It's a very historic judgment in that case में आप तो कहते नहीं अलाउ हुई हैं? सब SJC does not allow. कि क्या फायदे? वो वापस भेजा है ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को 577 पैरा 96. वो एक Consequently, the question regarding the conduct of proceedings. नहीं, तो ये तो वो रिमांड हो गया ना. ये केस रिमांड का केस है. नहीं, इसमें उन्होंने कहा कि नो आमिद खान साहब सब्जेक्ट टू सच. हम जो इतनी देर से आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ये पैराग्राफ 96 जो माय लॉर्ड ने पॉइंट आउट किया, सब पढ़िए. नहीं वो ठीक है, उससे आप पढ़िए तो. सर बात ये है, आप पहले पढ़ें तो ना 577 पे. Consequently, the question regarding conduct of proceedings through an open justice as requested by needs to be revisited and decided afresh by SCG, not
standing uninfluenced by its order dated so and so, जो order set aside उन्होंने किया. आप पढ़े ना. In the light of the observations made herein above. In the light of the observations. तो this is observations क्या हैं? एक सेकेंड जी. सर हमारी बात सुन लेना. अभी हम आपसे बार बार पूछ रहे थे रिमांड, तो ये रिमांड ही तो किया है. पिछले सवालों का जवाब है ये. तो ये पहले सवाल का जवाब इधर मिल रहा है. मैंने भी तो रिमांड ही मांगा है. नहीं, अगर आपने बताया ही नहीं, आप कोई और वजह से बताया. जजमेंट का मैं ये कह रहा था कि उसमें फिर क्या किया सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने इस ऑर्डर के बाद? इस ऑर्डर के बाद उन्होंने अलाउ की थी. इन दैट पर्टिकुलर केस दे अलाउड ओपन हियरिंग. वो ऑर्डर कहाँ है? वो कोई दूसरा रेफरेंस था? वो दूसरा रेफरेंस, वो रेफरेंस 242 है. अच्छा, ये केस नहीं जो इस केस में इम्प्यून था वो रेफरेंस 242. लेकिन इस रेफरेंस की तो बेसिस जो है वो तकरीर है, और उस तकरीर को आप डिनाई नहीं कर रहे हैं, उसके कंटेंट्स को. ठीक है, but then that has to be inquired into. तो मेरा गुजारिश ये करनी थी, जो जनाब के ऑब्जर्वेशन थी. That reference was dismissed. What happened? That was never decided. You want that ये proceedings take off. You want that be also be decided. आप चाहते हैं कि उसको भी डिसाइड करें? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, इसकी बात नहीं. मैं तो आपके सामने आपका प्रेसिडेंट दिखा रहा हूँ कि प्रेसिडेंट ये है. फिर उसमें इंक्वायरी के तरीकाकार इसमें बड़ा अच्छा तरह डिस्कस हुआ है, वो भी जरा देख लीजिएगा. उसमें उन्होंने कहा कि ये जो इंक्वायरी होगी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की, उनके ये पैरामीटर्स होंगे. मैं उसकी तरफ जनाब की तवज्जो दिला रहा था. वो तो आखिरी में उन्होंने कहा कि जी ठीक है, रिमांड कर रहे हैं आप, इस जजमेंट की लाइट में आप डिसाइड करें. परफेक्टली ऑल राइट. वो एक पैरा था, मैं कहा था इंक्वायरी में ये कुछ होना चाहिए. तो खत्म. जी सर. सो मेरी गुजारिश ये है कि all the judgment so far says that a judge cannot be removed on the basis of a report which is not based on inquiry. And this is a case without inquiry. The Supreme Judicial Council has submitted a report in which they have recommended the removal of the judge, and therefore that is clearly an unconstitutional void non-est order. About what Lordship was saying, उसके बारे में मेरी गुजारिश ये है कि प्रोसीडिंग्स में शोकॉस नोटिस हुआ एक, उसके 2 दफ़ा, पहला प्रिलिमिनरी रिप्लाई, फिर एडेड रिप्लाई, ये हुआ. उसके बाद एक एप्लीकेशन मैंने दी जिसमें मैंने कहा कि अगर अव्वल तो ये एड्रेसिंग ए बार एसोसिएशन इज नॉट ए मिसकॉन्डक्ट, बट इन केस यू वांट टू होल्ड इंक्वायरी प्लीज होल्ड इट इन ओपन कोर्ट. वो जजमेंट वो भी मैंने दिखा दिया. उसके बाद उससे 2 दिन बाद जब हियरिंग हुई, उसमें ये सारे सवाल आए और उसमें हमसे ये पूछा गया कि हाँ इंक्वायरी है, हमने बिल्कुल ये की है, ठीक है. नहीं, एक सेकेंड. सो देयर वर 2 रेफरेंसेस. एक में अलाउ हो गई आपका ओपन और दूसरे में नहीं अलाउ हुई. नहीं, दूसरे में तो आपने कहा था, आपने दरखास्त दी थी ना ओपन के लिए. सर वो तो ओपन क्वारी का तो प्रेसिडेंट बन चुका था. ओपन क्वारी का तो प्रेसिडेंट हो चुका था. अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि उसमें इंक्वायरी ओपन नहीं हुई थी, मैंने रिक्वेस्ट की थी. उसमें नहीं हुई. तो एक में किया और एक में नहीं किया. इसमें नहीं किया. फर्क क्या है दोनों में? फर्क ये है कि आफ्टर, इसमें तो इंक्वायरी सिरे से नहीं हुई ना. उसमें नहीं, मैं अब इंक्वायरी की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं अब कह रहा हूँ प्रोसीडिंग्स कि वो प्रोसीडिंग्स ओपन करें जी, वो इन कैमरा ना करें. एक में तो आपकी दरखास्त अलाउ हो गई. जी आप कह रहे हैं बिल्कुल, वो रेफरेंस नंबर 242 में. 242. मगर इस केस में इसका रेफरेंस नंबर क्या था? मौजूदा रेफरेंस. हाँ, इसमें आपने कहा नहीं हुई. इसमें तो इंक्वायरी नहीं हुई सर. या इंक्वायरी इज अ सेपरेट थिंग. ओपन प्रोसीडिंग्स की बात कर रहा हूँ. ओपन प्रोसीडिंग्स देखो, प्रोसीडिंग्स इंक्वायरी की होनी थी ना. इसमें सिरे से इंक्वायरी नहीं हुई. नहीं, वो एक अलग पॉइंट है. प्रोसीडिंग्स ओपन हुई या नहीं हुई? एप्लीकेशन पे कोई ऑर्डर नहीं हुई. यानी जितनी प्रोसीडिंग्स. इसका नंबर क्या है रेफरेंस का, ये वाली मौजूदा का? 347.
जितनी ठीक है, proceedings समझ थी, गया, वो समझ गया। open नहीं हुई। So distinguish Got it. ठीक उन है, cases में- खत्म. Can we ask Mr. Salahuddin? We want to wrap it up. Mr. Salahuddin, you've been hearing everything? Apologize, I was not able to be to Islamabad because of lack of availability of flights. What is the way forward? Address that point only. My Lord, my submission is that the report and the notification is to be set aside on the ground of being malafide and law. Please tell us the way forward. Yes, sir. My submission is that it cannot be remanded to the SJC. The SJC scope is limited under Article 209. However, this court, if it considers fit, and I would urge that it Who do you should represent? investigate the factual merit. Take second here, na. Who do you represent? My Lord, the Bar Association, Karachi Bar Association, and the Islamabad So Bar. you basically you don't want the truth to come out. No, sir. Yes, yes. In fact, my petition is. No, you are saying. No, you are saying. Please hear us. You are saying that the relief should be given to the petitioner, but the people of Pakistan should be kept in the dark because they can't handle the truth. So why can't it be remanded? Why are you saying it can't be remanded? No, not at all, sir. I'm not saying that it should not be investigated. My submission is that the proper forum would either be this court itself or a commission appointed. We are not seeking your opinion. We are seeking some legal response. In my opinion, that doesn't help us, does it? Why can't it be remanded? It is because of the language of 209 itself, sir. Where does it suggest that? In fact, Mr. Hamid Khan has just cited a case where it was remanded, the matter was remanded. इसमें ये जो केस इन्होंने रेफर किया है इसको डिस्कस करा I'm not arguing. 15 It cannot be remanded. If Mr. Shaukat Saddiqui was still now. We can't, voice is gone. 48. नहीं तो इनसे पूछ लेना, वो पढ़ेंगे ना. So the council to recommend his removal. Therefore, it does not have then the jurisdiction under 2096. And so the remand right now cannot be done. It could have been done 2 years ago. But right now, the remedy is that, and certainly those allegations. So you mean to say, you mean to say, on account there is a well-settled principle that no one should suffer as a consequence of act of court. So you're saying because the court delayed the matter for 2 years, the petitioner's valuable right has been taken away from him. Is that your argument? And we can't hear you. You're not speaking clearly. करें ना ठीक इसको. that the civil servants' actual tenure has ended. Civil servant को आपने जज बना दिया. नहीं सर, मगर अब आप please don't. Disciplinary proceedings का principle तो वही है सर. No, it's not. Please, no, don't do this. If you're reducing a constitutional office to the level of a bureaucratic thing and saying the same principle applies, with respect, I will not agree with you. My submission is that the stigma around a person's reputation caused by wrongful removal, that is something that he is entitled to remove, even if he has finished his age of service. It is the same principle which your lordships entertain appeals against convictions, even when Mr. Salahuddin, please, Mr. Salahuddin, please focus on the Constitution. Mr. Hamid Khan has read 2095, which says inquiry, then 2096, which talks about inquiry, and you are saying there's no need for an inquiry because he's retired, he's attained age of 62, so even if SJC did not comply with the Constitution, so let him suffer. Yes,
sir, what I am saying this court is to set aside the report of the Supreme Judicial Council and the President's notification on account of being without jurisdiction and then We are asking you, can it be remanded or not? We're not asking you, can it be set aside? my submission is the reason the factual allegations cannot be investigated anymore by the Supreme Judicial Council is because are you saying that we should take over the functions of the Supreme Judicial Council? That's the only solution then. There's no other way. Either they do it or we do it. The Supreme Judicial Council has a specific role whether it's different. Mr. Salahuddin, you're not providing us any solution. You are saying the Supreme Court should assume the functions of the Supreme Judicial Council. Yes, sir. The Supreme Judicial Council will end if a judge, for whatever reason, is no longer there. Then why are you saying for whatever reason we are dealing with a real case? Yes, sir. He has crossed the age of superannuation. So he should suffer. He should suffer because of that. No, I'm not saying he should suffer. I don't know. I'm saying the order can be set aside. Without conducting inquiry, we should set aside the order. Why? The order should be set aside without inquiry. No, without inquiry. Irrespective of the merits of the case, the order is without jurisdiction, therefore it deserves to be set aside. It is without jurisdiction for two reasons. The first reason is, sir, that the inquiry was not initiated. If you are arguing in this manner, what provision of law have you filed your petition under? 184.3. What's the first word in that? Then you don't have a case. Then we should dismiss your petition on that ground alone, because you're arguing against your own petition now. You are saying you're now claiming the right of an individual and not the public's right. Please read 184.3. It starts with the word public importance. So you are now pleading the case of the petitioner, not the public's. You're not saying exactly what you're doing. You say public should not know the truth of the matter. Please give him his pension and that's it. So the two aspects of public importance. आप पढ़ तो लेना 184.3. 184.3 पढ़िए ना जी. So the first aspect of public importance is that whether the SJC has the legal right to remove judges without a factual inquiry. That is a question of public importance. The second question of public importance here, which is separate, is whether the allegations of Mr. Shaukat Saddiqui were correct or not. That has to be investigated separately. My only submission is that the SJC no longer can do so. The reason I am saying this is, you don't. When you say a statement, back it up. That has to be investigated separately. I'm quoting your words. How? That's the only question we're asking you. Your Lordships, in 184.3, your Lordships can. I'm just quoting you. I'm quoting your words. Who will investigate? We. Say, tell us. The truth of the allegations can be determined by this court. So we'll record evidence. We will record evidence. We will record evidence. There's no bar to it, sir. But if your Lordships feel that feel की बात तो नहीं हो रही है. You are assisting the court. We don't go on feelings. Assist the court on the constitutional point, not on our feelings. My lord, there is no bar under 184.3 to recording of evidence. It is done even in constitutional petitions under Article 199. ये तो आप हमें वे फॉरवर्ड हम बार बार पूछ रहे हैं ना, वे फॉरवर्ड बताएं. गुजारिश ये है कि it may be referred to a commission. Sir, if you can speak slowly, we can't hear your words. Mike से थोड़ा पीछे हो जाए. Mike से थोड़ा पीछे हो जाए. जी सर, my submission is that it may be referred to
a commission that inquires into the factual truth or otherwise of his allegations. Because I completely agree that the allegations are of such a nature that the public has a right to know whether they are true or not. Where does the Supreme Court have this power to appoint a commission? My Lord, the power is 184(3). And No, don't just say these things. No. Read the language. Where does it say Supreme Court can appoint a commission? without prejudice to the provisions of Article 199, the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article. Now, now please stop. Go to 199 and say as that the High Court can constitute a commission. If they can, we can. my Lord, Unless you want us to start writing into words into the Constitution, you can't just say, just throw in something and say commission should be instituted. Commission, the only commission that I'm aware of is Commission of whatever Inquiry Act of 2017. yes, sir. Which the federal government constitutes. So where is the power of the Supreme Court to constitute a commission? My Lord, the mandamus would issue to the federal government. अब आप कहीं और जा रहे हैं तो आपकी प्रेयर में तो ये बातें हैं ही नहीं ना. What do you say about 210? Article 210. जरा पढ़े. For the purpose of inquiring into any matter, the Council shall have the same power as the Supreme Court has to issue directions or orders for securing the attendance of any person or the discovery or production of any document, and any such direction shall be enforceable as if it had been issued by the Supreme Court. What do you say about when in presence of such a vast powers, why you are reluctant to remand the matter to Supreme Judicial Council? सर मेरा ये कहना है कि साथ में 209(5) और 209(6) भी देख लिया जाए. पढ़े. If on information from any source, the council or the